Good morning students. In the last class we have discussed about the cofactors, how to find cofactors and minors. As I told you, minors are the determinants obtained by deleting the row and column in which that particular element occurs. Okay. Similarly, cofactors which are as equal to your minors with appropriate sign. Minor रे जहाँ cofactor रे शेयर रहेगा, किंतु cofactor रे हमारा इथी sign रहेगा. चारिटा बदल होती जोटा odd होती है. I told you A1, A21, A12, A23, A32 जैसे third order रही थी. जैसे बड़े row column मिसेला वाले हमारा odd होगा सेटी बड़े minus होगा, otherwise हमारा plus होगा. So this is all about your cofactors. Cofactor हमारा next topic रे 5B रे use होगा. Cofactor सेटी बड़े inverse करिया कहीं, तो हमें सेटी बड़े आउटरे continue करेगा. A 5A जो first chapter का है determinant, that is related to evaluating the determinants. Determinant रो evaluate पाएं. ओके, हमें सब जहाँ ओके evaluate of determinants or expansion of determinants. ये जहाँ में करेगा, as we know, as I given A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 हेले. Now to evaluate it, हमें A1, B2, C3 minus B3, C2 minus B1, C3, A2, C3, A2 minus C2, A3 plus C1, A2, B3 minus A3, B2. Okay, this is all about your expansion of a determinant. Right? Now here, while you are expanding, हमें यदि ताको किसी property use करिबा, हमें ताको easily कर पारिबा. Okay, before going to that, हमें area ଗୋଟେ triangle रो जदि हमको coordinate जाना अछि, vertex तीनटा जाना अछि, जोटा हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ी थिले, से एरिया टा भी हम बाहर कर पाया. ओके, सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. Area of a triangle, we can find the area of a triangle. Okay, suppose you have a triangle A, B, C. The coordinate of A x1, y1, coordinate of B x2, y2, and coordinate of C x3, y3. Okay, then we are having the area is equal to, just you have to, we know that हमें कौन जानती है, मैंने पका फर्स्ट ईयर में पढ़ा हाफ इनटू x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. तो एटा को डिटरमिनेंट आकार रे सजाई देबे, आउ किछि नै, सेटा ही एरिया ताको हमें हाउ कैन वी अरेंज एज ए डिटरमिनेंट. देखो आ x1 था y2 y3 एटा माइनस की कॉमन काट दो, x2 it will be y1 y3 plus x3 y1 minus y2. Okay, so एटा को जदि डिटरमिनेंट आकार रे सजाई देबे, what I will get, look at here, मु एमपी लिखुछि x1 एटा एटा होछि. ओके, so y2 y3 1 1 देखो y2 into 1 y3 into 1 minus x2
y1 y3 1 1, okay, then x3 y1 y2 1 1, so it becomes x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. Okay, this is your area of triangle ABC. Okay, so by determinate way you can find the area of the triangle if the vertices are given. If vertices are given, all vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. Okay, so you can find like this, right? Got it? So it is like our area of the triangle by using determinant method. I would consider on one example, when the area becomes 0, then the triangle area becomes 0, then the 3 points A, B, C are collinear. So you can say if delta is equal to 0, then the 3 points are collinear. Collinear means एक और in a line empty रहे A, B, C, they will lie in a line. Okay, तो तीनटा जगह पॉइंट गोटे जदी रही होला आले हमें ये कौन लिखियो डेल्टा माने कितने हम डेल्टा, so x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, if 0, then the 3 points, okay, are collinear, right? So this is your application. You can say the determinant example what I do, so that you can get the answer. Write down this one. Eta for collinear condition. And this is for getting area of the triangle. Okay, got it? Good example के लिए find the area of the triangle whose vertices are, okay, whose vertices are 2 3 5 4 and C 7 6. Okay, so solution, let it be the triangle A 2 3 B 5 4 C 7 6. Okay, so here we have, we write x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, xy is equal to 5,
y1 is equal to 4, sorry, y2. x3 is equal to 7, y3 is equal to 6. Okay, now therefore the area of the triangle is R, your x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, which is equal to half h1, 2, 5, 7, 3, 4, 6 and 1, 1, 1. Okay, now we will evaluate it. Half into 2, 4 1 is 4, minus 6, minus 5 over. 3 1 is 3, minus 6. Then it 3 1 is 3, minus 4, which is equal to half into 4 रू 6 वाले minus 2 into minus 2 minus 4, 3 रू minus 6 वाले minus 3 into minus 5 plus 15, 4 रू 7 वाले minus 1, this is your minus 7, which is equal to half into 4, 2. Okay, so the area of the triangle is 2 square units. Units जब किसी देखिबो otherwise square units हमें लिखि देबा. Okay, got it? हेला हमरा? Okay. Right? Now we'll delete this one. Here, while you are evaluating the determinant, we can easily evaluate it. ओके आमे ताको सहज रे इवैल्यूएट कर दबा सेति पई किछि हमर प्रॉपर्टी अछि हैला. तो बाय यूजिंग दोस प्रॉपर्टीज वी कैन इवैल्यूएट ए डिटरमिनेंट इजीली. आमे तो गणित सब बळे करूचे देयर आर माने किछि प्रॉब्लम्स आसीबो जोथरे कि ए जो प्रॉपर्टी आमे जदी यूज करिबा ताले आमे ताको सहज रे कर दे परिया. Okay, so this is the advantage of your properties. So देख पे हमें property use करिकरी evaluate करिया पे चेष्टा करिया. Okay, now some properties. Okay. The first property, the determinant remains unchanged by changing its rows into columns and columns into rows. First property says a determinant remains unaltered by changing rows into columns and columns into rows. This is property number 1. First property. What it says? Rows into columns, columns into rows. Row column जदि हमें इंटरचेंज कर दबा
जोटा कि हमर मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज बोली कहउतिले ताहले डिटरमिनेंट रो वैल्यू किछि भी चेंज होबो नाही ओके सपोज यू हैव द डिटरमिनेंट डेल्टा 1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c ओके अब हमें चेंज कर दवा we have another determinant by interchanging rows columns रो कॉलम इंटरचेंज कर दवा तो फर्स्ट रो टा को हमें फर्स्ट कॉलम करिया सेकंड रो टा को जोटा ट्रांसपोज थिला एंड थर्ड रो टा को then delta 1 is equal to delta 2 डिटरमिनेंट हमरो समान हो किछि भी चेंज हो रिमेंबर इटा इंटरचेंज कला बेले वन थिंग यू शुड रिमेंबर फर्स्ट रो टा से तो फर्स्ट कॉलम चेंज करिवो सेकंड को सेकंड से तो थर्ड को थर्ड से मन इच्छा इंटरचेंज कर देले वैल्यू बदलियो ओके अगेन आई एम रिपीटिंग corresponding रो कॉलम सहित ही इंटरचेंज करिवा रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम थर्ड रो को थर्ड कॉलम अदरवाइज हमरा भूल नहीं ओके गॉट इट राइट डाउन आई विल गिव एन एग्जांपल तो लिखि दियो ओके complete now what example do suppose you have a determinant a 2 5 7 3 4 6 1 1 now I will evaluate it as 4 1 4 minus 6 3 1 3 minus 6 3 1 3 minus 4 it becomes 2 into minus 2 minus 5 into minus 3 7 into minus 1 so it becomes minus 4 plus 15 minus 7 which is equal to 4 okay now what I do मु इंटरचेंज कर दे ओके रो कॉलम इंटरचेंज करूची 2 5 7 फर्स्ट रो रे दिला फर्स्ट कॉलम कर दे 3 4 6 3 4 6 1 1 1 1 1 1 now again I will evaluate it what I will get 2 4 1 4 minus 6 minus 3 eta dibo 5 1 5 minus 7 1 5 6 30 minus 7 4 28 what I am getting minus 3 into minus 2 plus 1 into 2 this is your minus 4 plus 6 plus 2 which is equal to 4 okay so what the property says by interchanging rows into its columns into rows then there is no change in the absolute value of the determinant okay write down the example this is your property number 1 okay now we'll go to property number 2 got it ठीक है now the second
the second property says the interchange of two adjacent rows or columns. Two rows or columns of a determinate changes the sign of the determinant without changing its absolute value. Okay, so एची property 2 रे कहला जे by changing two adjacent rows or columns. Remember, by interchanging two adjacent rows or columns of a determinant, the sign of the determinant without changing its absolute value. जदि आमे डिटरमिनेंट रो दीटा रो एडजेसेंट ओडिसा किबे दीटा कॉलम ओडिसा को चेंज करिबा ताहले केवल तारो साइन टा बदलिबो जदि मन कर 4 हेतिबो -4 हेजिबो -4 हेजिबो +4 एति केवल बदलिबो आ किछि बदलिबो नाही. Again I am giving example. Suppose say question diagram होछि a is equal to 2 5 7 3 4 6 1 1 1. Okay, before that taking example ମୁଁ तुमको कहि दઉં. Suppose delta is equal a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ओके, तो दीटा इंटरचेंज करिया. सपोज डेल्टा 2 बाहर करिया एटा ऊपर नहीं दिया a2 b2 c2 a1 b1 c1 and a3 b3 c3. Okay, now suppose delta 1 रो मूल्य आसला x, then the value of delta 2 will be minus x. Okay, so एठी एटा एठी आसला deta रो. This can be also for a column पाई मध्य से नियम लागू हमरा हे पाइबो. Okay, so any two rows or two columns जदि हमें एडजेसेंट रिमेंबर वन सहित थर्ड हमें बदले परिबानी. if you want to change third हमें तीन थर करके करबा. एग्रे इनका चेंज करी again suppose you want to change again एटा आउथि नबा. suppose delta 3 मिनेबी ए दिटा इंटरचेंज करछु a2 b2 c2 a3 b3 c3 a1 b1 c1. So what will be delta 3? Delta 3 will be again minus of minus x, that will be x. Okay, so this is your जदि किनी थरा हमें चेंज करिवा तो accordingly this is also for your column. Okay, got it? Write down this one, लिखि दियो भले भाबे. कॉलम मध्य चेंज कर एटी को बोले एबी से चेंज करली एटा एटी के आनी एटा एटी के आनी सो दैट आउ थरे माइनस साइन हला. सो ओरिजिनल x पळे आसला. सो एठी वैल्यू जहा थिबो शेयर होथिबो खाली माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चेंज होथिबो. ओके, रिमेंबर वन थिंग, एडजेसेंट रोज ओडिसा रो एंड
This is also for your columns. Okay, I am giving example. Property 2 रो example देखो. Suppose you have a determinant a is equal to 2, 5, 7, 3, 4, 6, 1, 1, 1. What is the value of the determinant? 2 into 4 minus 6, 5 into 3 minus 6 plus 7 into 3 minus 4. So it becomes 2 minus 2 minus 5 minus 3, 7 minus 1 minus 4 plus 15 minus 7, which is equal to 4. Now what I do, मुझे पे कौन करेगी? अबे इंटरचेंज करेगी. Okay? मु एटा ऊपर को नहीं करी, एटा तोड़ कर. So what will be interchanging the rows? एटा suppose A1, एटा A2. कौन बोली 3, 4, 6 ऊपर को आनेगी. 2, 5, 7, 1, 1, 1. Now I will evaluate it. 3, 5 minus 7, এটা 3 ले, এটা गला, 5 के 5 minus 7. ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବାର ତମର ହେଇଗଲା. -4, 2 1 2 -7 plus 6, 2 1 2 -5. Okay. So it becomes 3 minus 2 minus 4 minus 5 6 minus 3. So it is minus 6 plus 20 minus 18. 18 24 24 को बोले minus 4. Okay. So by रो एटा दीटा रो इंटरचेंज होला. हम जदी कॉलम भी इंटरचेंज करिया यू गेट द सेम. जदी कॉलम भी करिया हमें सेति ही आंसर पाइबा. सपोज आई एम टेकिंग द कॉलम A3 2 3 1 जगह रे 5 4 1 2 3 1 7 6 1. So what I get? It can interchange. Okay, so what I will get here? 5 into 3 minus 6. इधर और डिटरमिनेंट वैल्यू कितने आसे? 4. तो इटा -4 आसे. -2 into 5 minus 6, 7 into 4 minus 3, 5 minus 3 minus 2 minus 2 7 into 1 minus 15 plus 4 plus 7 increase your minus 4. Okay, so you can have tomorrow epode jeti sepode jeti ebulia equal. Okay, so row column interchange. Suppose mo out thare apu change kar debi. If I again change it, आउट थर चेंज कर दे तो दैट विल बी प्लस. तो प्रति थर जेते बेले गोटे गोटे थर होतुबो से प्रति थर गोटे गोटे हमर साइन सेइतरे ऐड हेकरी चलथिबो. ओके, बुझिया पड़िला. दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2. ओके, राइट डाउन दिस वन एग्जांपल. Okay, got it? Now property number 3. Now these two properties
will help. There are आउरी प्रॉपर्टी अच्छी. So the property जाको हमें apply करले हमको sometimes easy हबो to evaluate. Okay, जहाँ सब को आउची for expanding. Property 3 says that if two rows or two columns, this is the important property. Okay, if two rows or two columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. Is 0 or vanishes. Sometimes you can say vanishes means equals to 0. Okay, this is an important property. A property टा बहुत important अच्छे हम पे. तो हमें देते हुए इटा use करियो so many हमें देखिबा हमरो answers देखो जल्दी 0 है. Okay, so एठी यदि दीटा रो कि भाई दीटा कॉलम यदि समान अछि A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ए दीटा देखो समान लिखि देली मु therefore the determinant value vanishes. Okay, जेतेबेले दीटा रो कि बा दीटा कॉलम तमरो आइडेंटिकल ही होला, in that case without evaluating तमरा एटा 0 है. Okay, suppose you want to prove it, तो easy पूरा. Suppose delta is equal to delta 1 is equal to A1 B1 C1 A1 B1 C1 into B2 C2 एटा नेली. Okay, so आरो कोन कर मूल्यटा मु x कोइछि delta 2 ने भी इंटरचेंज करियो रो कॉलम. Okay, ए रो कॉलम इंटरचेंज कर जुबिले मने रखो, बट किछि चेंज होबनी बिकॉज़ बोथ आर आइडेंटिकल. एटे किछि चेंज होबनी. सो A1 B1 C1 A2 B2 C2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2, then what will be delta 2? Second property अनुसार it will be -x. delta 1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 तार delta x. एबे कोन करी प्रॉपर्टी 2 टा यूज करिवे. रो दीटा एडजेसेंट इंटरचेंज कर देबे. सो A1 B1 C1 A1 B1 C1 इंटरचेंज कर देली. सो इथि हमरो कोन आइ जीवो delta 2 पळे आसो. तो अकॉर्डिंग टू बाय प्रॉपर्टी 2 -x हला. सो दीटा देखो ऐड कर दो. delta 1 plus delta 2 it will be x plus -x. जेतु दीटा देखो समान, दीटा देखो समान अछि. देखो बिले दीटा देखो समान, किछि चेंज नै. सो 2 delta 1 किबा 2 delta 2 is equal to 0 लिख परिया. therefore delta 1 is equal to 0 is equal to delta 2. Okay, this is your property number 3. Okay, you can have the property, right? Put example take होची, छोटो example के. Okay, have you written this one? Okay, now I am giving one example. Suppose you have
A is equal to 2 3 4 1 6 3 2 3 4. So we will evaluate it. Obviously कौन करिया 2 into 24 minus 9 3 into eta 0 4 minus 6 plus 4 3 minus 12 2 24 9 बोले 15 3 minus 2 4 minus 9 this is your 30 अच्छा प्लस 6 अच्छा माइनस 36 which is equal to 0. Okay, evaluate कर ले 0 ला, but suppose हमें एंट्री देखी नहीं था 236 रो 1 is equal to रो 3 implies a is equal to 0 हमें एंट्री लिखी परिवा by using property इस इवैल्यूएट करिया दरकार नै हम whenever बीटा हमरो रो किबा बीटा कॉलम जदी 0 ही गला ताहाले हमें ताको सीधा सीधा 0 लिखि परिया मु तुमको एक्सरसाइज 5a करिया पे कहिथि 5a कला बेले तमे देखि दिबो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स 5a रो एक नंबर टा करिया पे कहिथि ओके हैव यू रिटन दिस वन ओके 5a रो एक नंबर टा करिया पे कहिथि okay now we discuss remaining properties in the next class. Thank you for today. One thing you should remember, property whenever you are using, whenever you are evaluating property जाको ठीक से माने रखी कि हम ताको यूज करिया पड़ियो so that हमको एडवांटेज रहबो अदरवाइज कोन हो ए भली हमरो लंबा बा इवैल्यूएट हो जोटा कि वेस्टेज ऑफ हमरो टाइम हो आ जेते मल्टीप्लिकेशन हो सेते भूल होबार भी चांस अछि सो विल कंटिन्यू दिस वन द नेक्स्ट क्लास. Thank you for today.